Dear students, good morning and welcome back. This is our second lecture on carbonyl compounds. In this lecture, I will explain to you general methods of preparation of aldehydes and ketones. Myself, Rakesh Singh, Associate Professor in Chemistry, Government Degree College Kathua, Union Territory of Jammu and Kashmir. Let us proceed with general methods of preparation of aldehydes and ketones. First method of preparation is by oxidation of alcohols. Primary alcohols upon oxidation under controlled conditions, either with acidified potassium dichromate or with aqueous oblique alkaline potassium permanganate form aldehyde. Controlled condition. Why I said controlled condition? Because with these reagents, aldehydes are readily oxidized to acid if allowed to remain in reaction. अगर एल्डिहाइड रिएक्शन मिक्सचर में रहता है, प्राइमरी अल्कोहल ने ऑक्सीडाइज होके दिया एल्डिहाइड. इफ द एल्डिहाइड रिमेन्स इन द रिएक्शन मिक्सचर, व्हाट विल हैपन? इट विल गेट रेडली ऑक्सीडाइज्ड टू द acid under the experimental condition. We don't want this. We are not preparing acids, we are preparing aldehydes. So what should we do? Aldehyde formed is distilled off as soon as it is formed. Is separated from the parent alcohol as soon as it is formed by distillation. And this can be done because boiling point of aldehyde is less than the parent alcohol. जैसे इथाइल अल्कोहल आपने लिया, उसने दिया एस्टर, इथेनॉल लिया, इथेनॉल. Boiling point of ethanol is less than what? Ethanol. It can be distilled off. It can be separated from the parent alcohol by distillation. As soon as the aldehyde is formed, we have to distill it off. यानी कि distillation continuously करते रहें, so that the aldehyde does not remain in the reaction and is prevented from being further oxidized to peroxide. Therefore, aldehydes are distilled off as soon as they are formed, as their boiling point is less than the parent alcohol from which they are formed. The reason है कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एल्डिहाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, उसमें होती है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. Hydrogen bond is a strong bond as compared to dipole dipole attraction, and hence boiling point of alcohols is higher than that of what? Aldehydes. This is primary alcohol oxidized with either acidified potassium dichromate or with aqueous oblique alkaline potassium permanganate, and we get aldehyde. Plus, you can write if you want. So here I have shown for your understanding. There is removal of hydrogen from oxygen and carbon, adjacent oxygen and carbon, and formation of double bond. We get what? We get ethanol. Ethanol से बनेगा ethanol plus one. Hydrogen and oxygen. So this is by oxidation of alcohol. ये हो गया oxidation of alcohol. Next method is another reagent. Use of another reagent for conversion of alcohol to aldehyde. So, however, Collins reagent. What is Collins reagent? Chromium trioxide and pyridine complex. Pyridine CrO3 complex. Or pyridinium chlorochromate. PCC. Pyridine chromium trioxide and HCl. Pyridinium chlorochromate. ये इसका फार्मूला. Pyridine HCl के साथ सॉल्ट NH positive CrO3Cl. Pyridinium chlorochromate. If these reagents are used, primary alcohols are oxidized to acids. Primary alcohols are oxidized to aldehydes without of any danger of further oxidation. That is, oxidation stops at aldehyde stage. Oxidation है वो aldehyde stage पे stop. Primary alcohols get oxidized to what? Aldehyde. With these reagents, they are better oxidizing agents.
no complication. Another reagent which can also be used, that is PDC, pyridinium dichromate. It is a complex of pyridine and dichromate. C5H5NH hold twice positive, Cr2O7. This is pyridinium dichromate. It is a very good oxidizing agent, strong oxidizing agent. It converts primary alcohol to aldehyde and secondary alcohol. अगर लिखना चाहें secondary alcohol to primary to aldehyde, secondary to, ये secondary alcohol मैंने दिखा दिया यहाँ पे. अगर इसको लेंगे तो क्या बनेगा कि pyridinium dichromate can also be for oxidation. तो ये जो reagents जो मैंने बताए, PCC, Collins reagent और PDC, they are better than what potassium dichromate, because here there is no danger of further oxidation of the aldehyde to acid. So we get aldehyde as the end product. Next, preparation of ketones को कैसे प्रिपेयर करेंगे? Secondary alcohols upon oxidation, जैसे primary alcohols upon oxidation with acidified potassium dichromate form aldehydes. So secondary alcohols form, secondary alcohol क्या बनाएंगे? Secondary alcohols क्या होते हैं? Secondary alcohols are those in which OH is attached to secondary covenant. The covenant atom attached to two carbon or R dash. They are alkyls or arides. So loss of water, आप लिखना चाहें लिख सकते, and we get the, for example, most common example of secondary alcohol is isopropyl alcohol, CI3, CH, CI3, secondary alcohol. Most common example. We treat it with oxidizing agent. There is loss of water, and we get acid. There is another important oxidation, open air oxidation. Secondary alcohols can be easily oxidized to ketones without any danger of being further oxidized to carboxylic acid by open air oxidation, which involve treatment of secondary alcohol with aluminium tertiary butoxide in presence of acid. Tertiary butyl alcohol का नाम आपने सुना होगा. Tertiary butyl alcohol. This is tertiary butyl alcohol. ये इसका आयन है tertiary butoxide. ये इतना हिस्सा tertiary butoxide. H पॉजिटिव अगर लूज कर, इसके साथ एल्यूमिनियम ने सॉल्ट बनाया. एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है प्लस. दैट इज व्हाई वी हैव 3 टर्शियरी ब्यूटोक्साइड आयन. इट इज सॉल्ट ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल विद एल्यूमिनियम. टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, एंड क्या बोला, एसिड. व्हाट हैपेंस, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ these hydrogens to the acetone and convert the secondary alcohol to the ketone. और dash C डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड C का टूट रहा है बच्चे, एक O का, ये आपस में बनाएंगे बैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट. तो आपने इंटैक्ट रखनी है. कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 होती है, 4 ही रहनी है. ये आप जिनकी 2 है, ये आपस में बना लेंगे. H ट्रांसफर इधर हो गया, सो वी गेट आइसोप्रोपाइल. लेकिन याद रखें इसमें हमें एसीटोन की हेल्प लेनी. It is conversion of any secondary alcohol into ketone by treating with aluminium tertiary butoxide and acetone. This reaction is called as what? Open air oxidation. इसको हम क्या कहते हैं? Open air oxidation. Oxidation because removal of hydrogen is occurring. Removal of hydrogen is also called as what? Oxidation. Next, this is another important method by catalytic dehydrogenation of alcohol. Catalytic dehydrogenation of alcohol. Primary alcohols upon dehydrogenation with hard copper form aldehyde, whereas secondary alcohols form ketone. This method resembles with the earlier method, with the only exception here is that here we are using what? Catalyst. Here we are using oxidizing agent.
So there, the hydrogen was being removed by oxygen, whereas here it is being removed catalytically. There will be loss of hydrogen, minus H2, minus H2. यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस होगा, वहां पे आप वाटर को निकाल रहे, ऑक्सीजन निकाल रही है हाइड्रोजन, यहाँ पे कैटलिस्ट रिमूव कर रहा, कैटालिटिकली by treating with hot copper at 573 Kelvin. Removal of hydrogen, we get aldehyde. Primary alcohol से बनेगा aldehyde, secondary alcohol से क्या बनेगा? We can prepare the aldehydes as well as ketones by this method by catalytic dehydrogenation. Removal of hydrogen with the help of catalyst. Catalytic dehydrogenation. Catalyst कौन सा यूज किया? Copper. Next, from acid chloride. This method is very important. From acid chloride. Acid chloride क्या होते हैं? What are acid chloride? Acyl halide भी कहते हैं आप. Acyl chloride, acyl group or CO group. Acid chloride. Acid chloride से first preparation of aldehyde. Aldehydes are prepared by reduction of acid chloride with hydrogen in presence of catalyst palladium suspended over barium sulfate and partially poisoned by addition of sulfur in boiling xylene as solvent. Xylene as solvent. As solvent. तो इसमें क्या होगा? There is a reduction. Reduction means removal of Cl. की जगह हाइड्रोजन ले लेगा, removal of electronegative element, addition of hydrogen, reduction. So there is a reduction and we get aldehyde. For example, R की जगह हमने लगा लिया CH3 acetyl chloride, we get acetaldehyde. हमने बेंजीन लगा लिया benzoyl chloride, we get benzaldehyde. So one important, this reduction is known by the name Rosenman reduction. कल को आपको short note on Rosenman reduction भी आ सकता है. What is Rosenman reduction? It is a reduction of acid chloride with hydrogen H2 in presence of palladium catalyst suspended over barium sulfate, partially poisoned by addition of sulfur in boiling xylene as solvent. The function of sulfur or quinoline, quinoline का भी इस्तेमाल कर सकते, is to poison the catalyst so that aldehydes are not further reduced to alcohol. Aldehydes की further reduction alcohol में prevent करने के लिए we have poisoned the catalyst. उसकी एक्टिविटी को कम किया, poisoning करके. एक और पॉइंट यहाँ पे दिया है, फॉर्मल क्लोराइड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड देयरफॉर कैनॉट बी यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड. फॉर्मल क्लोराइड ये हमने यहाँ पे लिखना था, कैनॉट बी यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ व्हाट? एल्डिहाइड. फॉर्मल क्लोराइड अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर. जैसे हम कोई भी एसिड क्लोराइड यहाँ यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मल क्लोराइड कैनॉट बी बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर. Next we have preparation of ketone from acid chloride. ये हमने प्रीवियस किया, जो हमने अभी डिस्कस किया, that was Rosenman reduction. और उसमें हमने क्या किया? Reduction of acid chloride with hydrogen in presence of palladium suspended on barium sulfate when we get aldehyde. और ketone बनाना हो तो कैसे बनाए? वो Rosenman reduction से नहीं बनेगा. For that what we do? We treat the acid chloride with dialkyl cadmium. के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि डाइअल्काइल कैडमियम के बजाय ग्रिग्नॉट रीजेंट क्यों ना यूज कर ले? वो भी तो R नेगेटिव देता है. Why it cannot be used? Because grignard reagent will advance react with the ketone form. Grignard reagent ketone से भी react करता है. आपने पढ़ा. Studied this important aspect in preparation of alcohol, another chapter in your syllabus. So grignard reagent here cannot be used. Remember it, because if we use the grignard reagent, it will convert the acid chloride into ketone. What? The ketone formed will advance react with the grignard reagent, and we will get alcohols as end product. It cannot be used. Here we use what? Here we use dialkyl cadmium. Dialkyl cadmium. Cadmium is positive or is
It can react with acetyl chloride but does not react with the ketone. एसिड क्लोराइड का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर स्ट्रॉन्ग है, कीटोन का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर थोड़ा सा वीक है. कैडमियम जो डाई अल्काइल कैडमियम है, ये इतना रिएक्टिव नहीं है जितना कौन है, ग्रिग्नॉट. इट कैन रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड बट इट डज नॉट रिएक्ट विद द कीटोन. हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, कीटोन एज एंड प्रोडक्ट. तो डाई अल्काइल कैडमियम और डैश अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन with removal of Cl from here, cadmium chloride बनेगा. एंड साथ में क्या बनेगा, R C double bond R dash. R dash is coming from this side and R from this side. Get the ketone. Now another method. This was how to prepare aldehydes and ketone from acid chloride. Now next method is by dry distillation of calcium salt of fatty acid. पहले मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड होते क्या. दिस इज एसिड, दिस इज calcium belong to, it is a alkaline earth metal, it belong to second group, beryllium, magnesium, calcium. Its oxidation state is 2. So when it forms salt, its salt will be like this. Twice calcium. अगर हम सोडियम की बात करें, आपको पता है it is like this because it is first group metal. This second group, it has oxidation state of +2. So we get, so dry distillation. So distillation of calcium salt of formic acid gives formaldehyde. Distillation of calcium salt of higher acid with calcium salt of formic acid gives aldehyde other than formaldehyde. Important point. One by one हम discuss कर लेते हैं. One by one let us discuss. Don't worry. First, what I said oxidation of calcium salt of formic acid. Formic acid is what? HCOOH. इसका calcium salt. HCOO twice calcium. स्ट्रक्चर हमने लिखा HCOO कैल्शियम. तो distillation of calcium salt of formic acid gives formaldehyde HCl, calcium carbonate बाहर. Second, distillation of calcium salt of higher acid with calcium salt of formic acid. Calcium salt of higher acid, say calcium acetate, with calcium salt of formic acid gives aldehyde other than formaldehyde. अगर प्योर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड लेते हैं, वी गेट फॉर्मल्डिहाइड. अगर हम मिक्सचर लेते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ हायर एसिड एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक, ये तो रखना ही रखना है. इन दैट केस वी गेट एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड. ये देखिए CH3CO, कैल्शियम कार्बोनेट तो निकलना है बच्चे. CH3COH, CH3CHO, CH3CHO एस्टल्डिहाइड. और एक चीज याद रखिए, दिस मेथड, ये वाला, this method is not useful for preparation of aldehyde except formaldehyde because yields are low. ऐसा क्यों? This is because when mixture of two different calcium salt is heated, three products are formed. three कौन सी? हमने तो क्रॉसिंग दिखाई ना, ये आपस में भी तो रिएक्ट कर सकते हैं. HCHO भी बन सकता और CH3COCH3 बन सकता. three products are possible. हम बनाने चले थे एस्टल्डिहाइड, but in addition to this we got formaldehyde and acetone. फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन आया मैंने. एस्टल्डिहाइड क्योंकि मैं उसके लिए यूज कर रहा हूँ और मुझे साथ साथ में दो प्रोडक्ट और भी मिल गए. तो ये मेथड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड के लिए इतना अच्छा मेथड नहीं है बिकॉज हियर वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स. नाउ ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड, नो मिक्सचर अदर देन फॉर्मिक एसिड, कोई भी ले ले, जैसे कैल्शियम एसीटेट, सो वी गेट कीटोन. we get calcium carbonate निकलेगा CH3COCH3. Process is same in all. In all there is loss of calcium carbonate. For example, calcium acetate, loss of calcium carbonate, ये निकलेगा बच्चे calcium acetate, and we get CH3COCH. We get acetone. This was distillation of calcium salt of acid. Now another method from fatty acid. Next method from fatty acid.
earlier was calcium salt of acid, now it is directly from acid से direct organic acid by passing vapors of fatty acid organic acid over MnO manganese oxide at 573 Kelvin. If we take formic acid, अगर हम formic acid लेते हैं, this formation of formaldehyde is loss of water, the loss of water and क्या बचे कार्बन डाइऑक्साइड माइनस कार्बन डाइऑक्साइड माइनस वाटर। अगर हम अदर एसिड लेते हैं अदर देन फॉर्मिक एसिड, ये देखिए एसिटिक एसिड लिया, वी गेट कीटोन, की लॉस ऑफ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड होना ही होना। एंड इफ वी टेक मिक्सचर ऑफ एसिड, मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स in which one acid is formic acid, mixture of formic acid and other acid gives the aldehyde other than formaldehyde, CH3CH2. Now here this bond is weak bond, this bond is strong, तो इसकी probability ज्यादा रहेगी, यहाँ से break probability of this will be higher. So here we get what aldehyde other than formaldehyde. यहाँ पे बच्चे देखें from fatty acid by passing vapors of fatty acid over manganese oxide at 573 Kelvin. If we take formic acid, we get formaldehyde, HCl, along with formation of carbon dioxide and water. If we take acid other than formic acid, we get ketone. And if we take a mixture of acid in which one acid is formic acid, then we get aldehyde other than what? Formaldehyde. यहाँ पे आप R लगा के भी शो कर सकते हैं RCl, but one acid should be formic acid. एक acid formic acid. Another method from Grignard region. This is a very interesting method. Important method from Grignard. Aldehydes can be prepared by treating Grignard reagent क्या होता है? RMgX. बार बार मैं बता चुका हूं कि Grignard reagent में R is highly reactive. Grignard reagent itself is highly reactive, and here R is negative and it acts as nucleophile. Nucleophile का काम करता है, R negative. ये attack करेगा. So by treating Grignard reagent with HCN or अल्केन नाइट्राइड CH3CN, Grignard reagent को ट्रीट करना HCN से या किससे बचे? HCN से या अल्केन नाइट्राइड CH3CN से या बेंजोनाइट्राइड CN होना चाहिए। तो R नेगेटिव Mg पॉजिटिव, इट विल अटैक हियर ऑन कार्बन। पाई बॉन्ड है, टूटेगा, वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंपल एडिशन, CH3 get added on C, N negative, MgBr positive, we get. याद रखें पर सेकंड स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप आपने तभी करना है जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर गया हो किससे? HCl. कंप्लीटली इट शुड हैव रिएक्टेड। एक्वस मीडियम सेकंड स्टेप आपने तभी प्रोवाइड करना है सो दैट नो ग्रिग्नार्ड रीजेंट is there to react with the final product. First step, let the first step complete. Complete हो गया, we got this. Then provide the aqueous acidic medium hydrolysis. यहाँ पे हो जाएगी बच्चे, इस बॉन्ड पे C को मिलेगा O, N को मिलेगा H, ऐसे बन। बेसिकली थोड़ा लंबा प्रोसेस है ये। NH2 MgBr, इसकी फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी HOH NH3 MgBrO। अगर आप इसमें देखना चाहें बच्चे, एडिशन ऑफ वाटर होगा पहले ही, मैं दिखा देता हूं आपको। HCl3OH एक साइड अंडरस्टूड है, ऐड होना कौन? OH। एक साइड ऐड होना कौन? H। H कहाँ ऐड होना आप बता सकते हैं मुझे? H ऐड होना नेगेटिव पे और OH ऐड होना पॉजिटिव। C इज पॉजिटिव, N इज नेगेटिव, तो एडिशन ऑफ वाटर हो गया। आपने पढ़ा है कि जब भी गिवन कार्बन से दो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे OH 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 NH ऐड हो, वो अपने आप को स्टेबलाइज करता लाइक दिस। अगर दो OH लॉस ऑफ वाटर होता, it will stabilize itself like this, NH negative H positive, NH
एट द एंड व्हाट सी गॉट डबल बॉन्ड। आप सोचेंगे कि सी को डबल बॉन्ड ओ कैसे मिला, मैंने आपको मैकेनिज्म की मदद से दिखा दिया। तो सी डबल बॉन्ड एन गेट रिप्लेस्ड बाई सी डबल बॉन्ड, एंड व्हाट एन गेट टू हाइड्रोजन, टू बॉन्ड इसके ब्रेक हो रहे हैं, NH2 MgBr। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे फर्दर वाटर से, वो तो पता है मीडियम में, NH2 नेगेटिव H पॉजिटिव, वी गेट अमोनिया, प्लस क्या मिलेगा MgBrOH, MgBrOH ये देखिए बच्चे, तो ये बन गया आपका एल्डी। वी गॉट की तरह से अगर आप लेते हैं अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल, सेम रिएक्शन, वी गॉट दिस एडिशन प्रोडक्ट, देन अगेन हाइड्रोलिसिस, वी गेट कीटोन। हमें क्या मिलेगा, बेंजोनाइट्राइल लेते हैं तो वी विल गेट एरोमेटिक, प्रोसेस सेम रहेगा। एडिशन ऑफ दिस ग्रिग्नॉट रीजेंट, वी गेट एडिशन प्रोडक्ट, देन हाइड्रोलिसिस, लॉस ऑफ अमोनिया MgBrOH कैसे हुआ मैंने आपको दिखाया, वी गेट एसीटोन। पर इस मेथड से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा बच्चे, बाय दिस मेथड यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि एक अल्काइल ग्रिग्नॉट रीजेंट है देना ही देना, वन अल्काइल जब आ गया फिर it cannot be formaldehyde, because in formaldehyde we have hydrogen, two hydrogen on the carbonyl carbon, whereas when we treat with Grignard reagent, at least one will be alkyl, one will be alkyl, depending upon the other reagent. If it is H, we get aldehyde, if it is alkyl or aryl, we get, even आपको पहले बता दिया कि it is important to note that aqueous medium is provided only when all Grignard reagent has reacted in first step of reaction to form addition product, and hence Grignard reagent cannot react with end product, that is aldehyde or aldehyde ketone से कोई खतरा नहीं है Grignard reagent को, क्योंकि हमने Grignard reagent को फर्स्ट स्टेप में पहले कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया। नाउ नेक्स्ट, by ozonolysis of, this is another method, by ozonolysis of alkenes, alkenes की ozonolysis। alkenes क्या होते हैं, compounds with carbon carbon double bond। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ओजोन गेट एडेड ऑन द डबल बॉन्ड, पहले ओजोन डबल बॉन्ड पे ऐड होता बच्चे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज सॉल्वेंट, एंड वी गेट ओजोनाइड एडिशन प्रोडक्ट, देन इट इज ट्रीटेड विद जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिंक एंड वाटर से इसको हम ट्रीट करते, एंड देन इट डिकम्पोजेस, ब्रेक्स like this, जैसा मैंने दिखाया सिरल बॉन्ड हो सिरल बॉन्ड, along with formation of hydrogen peroxide, basically O को रिमूव करना वाटर, but hydrogen peroxide is a oxidizing agent, it can oxidize the aldehyde form, so to save the aldehyde we add zinc, zinc will react with it to form zinc oxide plus water। तो जिंक प्रोडक्ट को सेव करने के लिए, अदरवाइज काम तो वाटर भी कर देता, डिकम्पोजिशन वाटर भी कर देता, जो हमारा ओजोनाइड है, but to save the product from oxidation we added zinc, zinc sacrifice itself, अपने आप उसने sacrifice किया by reacting with hydrogen peroxide to form zinc oxide and water again, zinc oxide ही लिखना है यहाँ पे आपने, तो we get what, aldehyde or ketone, aldehyde or ketone depending upon value of R or dash, for example देखिए यहाँ दिखाया होगा, if you take ethene we get formaldehyde, if you take butene we get acetaldehyde, if you take this compound 2,3-dimethyl butene, 1 2 3 4 2,3-dimethyl, here it is methyl, 2,3-dimethyl butene, first ozonide बनेगा बच्चे, ozonide, and there is decomposition with what, water and zinc, and we get acetone। कई बार इसमें रिवर्स क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, प्रोडक्ट दी होती है और आपसे कहा जाता है कि ये ओजोनोलिसिस की प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस, बताइए इसमें रिएक्टेंट कौन है, तो आपने क्या करना है बच्चे, ऑक्सीजन को हटा देना है और इनको डबल बॉन्ड से जोड़ देना, एंड यू गेट द स्टार्टिंग रिएक्शन। रिवर्स भी पूछते हैं, व्हाट इज द ओजोनोलिसिस, यू ओजोन, ओजोन का यूज किया, लिसिस मीन ब्रेक, हमने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, बॉन्ड ब्रेक अल्कीन का, and in place of C double bond C we got C double bond, this is ozonolysis of what, ozonolysis of alkenes, we get
एल्डिहाइड्स एज वेल एज भी बनाए हमने बच्चे, कीटोन भी बनाए। नेक्स्ट, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन की हाइड्रेशन, व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रेशन? एडिशन ऑफ वाटर। एल्काइन ले लेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, we took the alkyne CH triple bond CH, propyne alkyne, we add water in presence of H2SO4 and mercuric sulfate, H2SO4 and mercuric sulfate, there is addition of water, water addition तो आपको आता होगा, pi bond will break, एक साइड H ऐड हो जाएगा, CH2 CHOH, now it is enol। enol में क्या होता है बच्चे? आपने पढ़ा, enol form is less stable unless stabilized by hydrogen bonding, it is less stable than the keto form, oxo form, so it tautomerizes like this, tautomerize हो जाएगा। less stable क्यों होती है? because the lone pair on the adjacent oxygen is repelling the repulsion to it, so it tautomerizes to more stable form। तो आप बात करते हैं प्रोपाइन की, H2SO4 मर्क्यूरिक सल्फेट, मार्क उन्हीं का जरूर पढ़ा होगा आपने, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट गोस टू दैट कार्बन कंटेन लेस हाइड्रोजन, OH इस कार्बन पे ऐड होगा, again there is tautomerism, enol tautomerism, we get ketone by hydration of alkynes। another method, preparation of aldehydes only, aldehyde के लिए from nitrides, cyanides, alkane nitrile or alkyl cyanide, so by reduction with stannous chloride and HCl, stannous chloride and HCl बन जाएगा SnCl4 और साथ में निकलेगा H, वो H करेगा रिड्यूस, एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, एक H यहाँ, तो वी गेट RCH डबल बॉन्ड NH, फिर इसकी कर दीजिए हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वी गेट RCH, माइनस क्या हो जाएगा? अमोनिया, N को H मिलेगा और C को, ये हमने ग्रिग्नॉड रिएजेंट में, वहां भी ऐसा ही बॉन्ड था, वहां था CH डबल बॉन्ड N MgBr, बस इतना फर्क, वहां भी तो हाइड्रोलिसिस दिखाया आपने, ये अगर आपको याद दिखाया ना, सेम टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस इज दिस, RCH double bond NH hydrolysis, acidic hydrolysis with water, and we get what? E positive will get O negative, N negative will get H positive. Next, manufacture of formaldehyde. This method is only for formaldehyde, simple. By oxidation of manufacture, large scale पे अगर आप formaldehyde को बनाना चाहते हैं, what do? We oxidize methyl alcohol with oxygen in presence of copper as catalyst in the temperature range of 885 to 875 Kelvin, and we get formaldehyde. Preparation of aromatic aldehydes and ketones. These methods are exclusively for aromatic aldehydes and by oxidation of toluene with chromium trioxide in presence of acidic anhydride. What happens? This chromium trioxide and acidic anhydride react, and what happens from this product? इसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस, this product on हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस क्या होगा बच्चे? ये बनेगा CHOH, यहाँ हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, O नेगेटिव H पॉजिटिव, O नेगेटिव H पॉजिटिव, एक कार्बन से एक से ज्यादा OH अटैच हो, देयर इज लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर होगा, एंड वी गेट LD, बेंजल डी। सो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन विद इसके साथ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक, लीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, ये तो आपने पढ़ा, लीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन एसाइलेशन जिसको कहते हैं, बाय ट्रीटिंग बेंजीन विद एसाइल हैलाइड, बेंजीन को ट्रीट करना है किससे बच्चे? एसाइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ, वी टेक द बेंजीन, दिस इज बेंजीन, वी ट्रीट इट विद व्हाट? एसाइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, हैलोजन कैरियर, ये रिमूव करेगा Cl को, जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल, C पॉजिटिव विल रिप्लेस H पॉजिटिव, और हमको क्या मिल जाएगा? एंड प्रोडक्ट, व्हाट वी विल गेट एज एंड प्रोडक्ट? COR, दैट इज वी गेट, हमें क्या मिलेगा? COR. It is of two types, acetylation and benzoylation. If we take
If we use acetyl chloride, reaction is called acetylation. This is general reaction. And if we use benzoyl chloride, it is called benzoylation. Acetylation, we get acetophenone. Benzoylation, we get benzo. Aromatic ketones are called phenones. इसके साथ एसिडो ग्रुप लगा है तो एसिटोफिनोन, इसके साथ बेंजो ग्रुप लगा है बेंजो। दूसरी साइड पता है बेंजीन है, क्योंकि फिनोन वर्ड यूज हो गया, मीन सीओ के एक साइड बेंजीन है, इट इज एरोमेटिक। फिनोन मींस एरोमेटिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। इस मेथड से आपने देखा बेंजल्डिहाइड नहीं बना, उसके लिए अनदर मेथड है फ्रीडल प्लॉट के बजाय गैटरमैन-कोच रिएक्शन। फॉर्माइल क्लोराइड, जैसे प्रीवियस में देखें आप इसमें स्लाइड में हमने यूज किया, नोट इट, हमने यूज किया एसिटाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड क्यों नहीं यूज किया? बिकॉज़ इट इज अनस्टेबल। फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल, तो हम उसको इन सिटू बनाते हैं बाय ट्रीटिंग बेंजीन विद किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। रिवर्सिबल रिएक्शन, जितना बनता जाता रिएक्ट करता जाता, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड साइड शिफ्ट होता जाता। Equilibrium gets shifted towards forward side. CO and HCl react to form formyl chloride. Reaction is reversible because formyl chloride is unstable. Store करके इसको रख नहीं सकते because decompose हो जाएगा over period of time. It will get decomposed. So instead of using formyl chloride, we treat the benzene with carbon monoxide and HCl. They react to form this and it goes on reacting. The rest of the reaction is same as that of Friedel-Crofts. The name is different because it has been done by a different scientist. It is called as Gatterman-Koch reaction. It is also called formylation. जैसे acetylation, benzoylation, it is called formylation. Formal chloride being unstable cannot be stored and hence prepared at time of reaction. Reaction के time पे बनाया है. The rest process is same. It will remove this CHO will replace H positive and we get Becker's process. Alkenes can be converted to aldehyde and ketone by treating with aqueous acidified palladium chloride, PdCl2, and cupric chloride, CuCl। तो ये कैटलिस्ट हो गया, पैलेडियम क्लोराइड खुद रिएक्ट कर रहा है इसमें बच्चे रिएक्शन में, एंड व्हाट वी गेट एस्टरडी। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज हमने ऐड किया किसको बच्चे? दिस वाटर। कैटालिटिक एडिशन है ये, पैलेडियम क्लोराइड इसमें खुद हिस्सा ले रहा है, आप देखिए इट इज इटसेल्फ टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस। तो जो Cl है इसके, वो ये हाइड्रोजन को दे रहा है, बना रहा है 2 टाइम HCl, है ना, और जो ऑक्सीजन है वो ऐड कर रहा है इसके ऊपर। जब ऑक्सीजन ऐड करेगा तो यहाँ से अंडरस्टूड है एक H इधर को शिफ्ट करेगा, तो आपको क्या मिलेगा? CH3। तो अगर आप प्रोपीन लेते हैं तो आपने पढ़ा कि नेगेटिव पार्ट ऐड टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेस हाइड्रोजन। तो एक किस्म से आप इसको मार्कोनिकॉव्स रूल के साथ जोड़ के देख सकते हैं कि आपके दिमाग में आए कि मुझे CO डबल बॉन्ड वो कहाँ लगाना है। Here we have to use it and we get acetyl। In case we use ethene, we get acetaldehyde. In case we use propene, we get acetyl। This is Becker's process. By treating alkenes with acidified solution of palladium chloride and cupric chloride. These were the general methods of preparation of aldehydes and ketones. Thank you very much. This is my WhatsApp number. You can contact me if you have any query, any doubt regarding this video lecture. Thank you very much.